Guys, welcome back to the streaming session. And in this streaming session, before starting the streaming session, let me introduce myself. My name is Naman, and I am learning development. Actually, I completed my Stack technology, but I am doing live every single day to just revise the concept that I have learned. So I use this method so I can teach you, so I can understand myself and also you. Okay. And I'm a final year BCA student who doing a BCA, and right now I'm in my final year. Realizing all the concept that's related to React code. Okay, before starting the streaming session, let me just make sure the internet connectivity speed is okay, so we can't interrupting and face any problem during this streaming session. Okay, is my quality is okay to everyone? Just comment down and write down because I just use the mic. Okay, today I use this fancy mic, content creator mic, because I'm just facing a problem because I use this earphones in my other certification, but actually the problem is using this certification, my ear is paining because I just rolling this wire into my ear, then use it. Okay. So that's why I use this mic. And is the quality of the mic is okay? If you just can you anyone who's just watching this streaming, just comment down yes or no. Is the voice quality of this mic is okay? So we should start. We should continue the streaming session. Otherwise, we use that earphones. Okay. Yes, just comment down because my other check out on mic is because I'm just facing a problem because I use this earphones in my other certification, but actually the problem is using this certification, my ear is paining because I just rolling this wire into my ear, then use it. ठीक है? So that's why I is my voice quality क्या voice फट रही है? Guys, is my voice getting disturbed and getting rough? Because I just feel कि काफी फटी फटी आवाज आ रही है. Is this mic is not filtering my voice? Actually, voice is clear, but still they're just looking like I'm just talking into a container. Yes, just comment down because I will check out on mic is because I'm just facing a problem because I use this earphones in my getting a rough because I just feel कि काफी फटी फटी आवाज आ रही है. Is this my anybody who's just struggling to understand my voice, just comment down, okay? So I can switch into that mic because I will see that there is a problem and the problem is simple and I feel the voice quality is very poor quality. ठीक है? So if you just have any problem, ठीक है? You can simply comment down. ठीक है? So I change the mic because the voice quality is so important in this streaming session because I just simply tell you. And if you can't comfortably hear my voice, how can you just understand it and for the purpose of that stream? Okay. So if you're facing any problem, just comment down. Okay. So let's start this streaming session. And in today's, we have to just revise React code, basic ticket React. You everybody know that React is the most important topic if you are learning a web development, basically in front end. If you know the HTML, CSS, you can also create uh, front end using an HTML, CSS, and JavaScript. But React is a fast and a JavaScript library that help you to build a good web application using less coder and a single page application. Yeah, you everybody knows that what is a React. Mostly, I think everybody's know what is a React. Okay, so now just moving to. I just need to creating a new folder, na? I just need to create a new folder because I currently I just using portfolio project. So why I should when I just use this? So okay, so I think I need to creating new folder. Okay, so I just simply create a new folder and just creating using a folder name React Learning. Okay, okay. So let me ask. Oh no, it's not it's a problem because when I'm opening the folder and creating should be a problem. I think it's not be fixed. I understand that it will be not fixed because can I just close this tab, close window. This will just ruin the entire streaming session because I will face that if I just use this, it will be never gone. Mhm. Okay, just wait seconds. Okay, so
Yeah, I need to just disconnect the streaming session. By the way, case if if our VS Code is not working correctly, how can we have just write a code which code I can use it? Because when I just simply open a folder, it will just give an issue. Control W, Control W, close this tab. And that's why I just forget it. Key. I'm just using the request. Why just creating a issue by just I using this thing? So the probably when I just creating this folder, they just simply open it and okay. So I think we have to use a different code editor. Okay, don't worry, we just close this tab and use a different code editor. Okay, let me just wait a few seconds. I try to close that tab and it just closed. Holy shit. Are you in a college or a graduate? No, bro, I'm in college. I'm a final year student, a BCA final year student. Currently, my month stack is completed. I'm just going live every single day, preparing for an interview. Okay. By the way, you are just responding in the chat section, so I just need you to know if my voice quality is okay and you can understand what I'm saying and what I'm trying to say to you. Because today I just use this mic to speak, but otherwise I rather use this earphones. So just you can confirm it, is my voice quality is okay? You can understand that. Okay. So now just moving to open the new editor. Okay. It will be not closed, I know. Okay. इसका कुछ नहीं कर सकते. So we have to just open anti-gravity coordinator and I will just learning React using this. Okay. Core React. This is the most important core React because you don't need to understand that learn React. Okay. We have to only understand according to the 80-20 rule. I think that I actually need to think that we just like कि हम वही चीज learn करेंगे that is necessary. Okay. So we don't use this thing. Just simply go to that desktop and here is the ocean gym. Okay. And I just open this folder and I creating a new project, new React project in that folder. So just simply go to terminal and I just write the command. Just wait a few seconds. Okay. We just creating a npm create wheat at the rate latest. Okay. We're using this command to create our React application. Okay. By the way, we also study according to that template. Not a template that are resources that I have prepared in my Notion. So let me just show you. Just wait a second. I'm using a JavaScript. Okay. Just enter it, and you can see that our all the dependencies will be there. Okay. You can see a white project. This is a completely React project. Okay. Why that's tabbing opening by the way actually don't need it. It's okay. Okay. I have also learned one stack. Yeah. Oh yes. Yes. Yeah. It's excellent. It's excellent, bro. We are learning also one stack. So are you preparing for the interview or internship? Are you preparing for internship or internship? What to learn next after month stack? Bro, if you know the month stack, the next is moving to the next years. My month stack is completed, but now I'm just revising and go through so I can just remember the thing that actually I've learned because I just don't practice it. Practicing, I just forget it. So I just practicing because for the last few months, just like I have a college exam and assignment and I don't have so much time practicing. That's why reason I just doing some week in month stack, so I just revising. Okay. And if you have learning, if you're learning JavaScript, if you have learning a month stack, so next step is go to with. Okay. Right now I am in third year. Okay, you are a BTech student or a BCA bro? You are a BTech or a BCA student? So here you can see that we have created our resources as space repetition web development resources where you can just we use these resources that I have created by me mine using an Cloud AI or a chat GPT. So let's here you can see that today we have to also a topic of a government browser. Okay.
after DOM selection, if you are a completely beginner and you don't know what is DOM, so I think first thing you need to learn DOM and then you jump to the React. Okay. Because it is an okay, you are a BTech student. Yes, bro. Okay, you are a BTech student and you are learning. You you are just currently learning one stack, or you have a passionate or a completely built one stack. It's like yeah, what I'm saying to you. Just simply, is your one stack is completed? Is your one stack is completed? मतलब तुमने अपना अच्छे से कर लिया one stack and you have created some few projects using one stack. Okay. And this is a DOM selection, DOM manipulation, event listening, event bubbling capturing, handling, local storage and session storage or cookies. There are some few topics you can simply understand it by Google. Because it's a DOM, just like you have to just targeting the HTML element and change it dynamically on the basis of what operation you perform. ठीक है? This is an easy, not a hard. ठीक है? And just like कि तुम ये देखो यहाँ पे ना you don't need to revise this all topic too deeply because if you have a learning to web development, most of the probability you don't working on with DOM because it will be a very modern thing, which is a very old thing. It will be used this in traditional web development. There we have so many sources, so why we use and focusing on that thing that doesn't matter. So I just avoid this. I just know the basics of how the DOM is work because if you're working on a React, you also know React is working on a virtual DOM and रियल डॉम वर्चुअल डॉम ठीक है यू हैव नो दैट व्हाट इज आवर रिएक्ट ठीक है इसमें भी हम इसमें भी रिएक्ट में भी हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं बट इट इज एन वर्चुअल डॉम आई थिंक ना रिएक्ट इज अ वर्चुअल डॉम मैनिपुलेशन ओके वर्चुअल डॉम इज जस्ट लाइक ठीक है हियर यू कैन सी दैट a react basics and setup ठीक है and if you just suppose that in your interview an interviewer asks you a question yes I have built real time web application using one stack okay great you have built a completely real time web application using one stack so should you use it. Should you build it without watching a tutorial? Just say, is you building that entire project without watching a tutorial? Because I just feel that most of the students just building a project using tutorial rather than also currently building a project watching tutorial because just like you, it's very difficult to creating an entire project from scratch. So I just use tutorial to build that project and I implement one feature from my side on editing. So just I can improve my logics and also just throw time stuck in tutorial help. So are you just building the entire project without watching tutorials, without following any tutorial? Okay, it's a notion. Okay. And it is just like suppose and what can I suppose this? It's not a flashcard. It is an you simply write a to do and this is quick notes. Quick notes. Here is a quick notes. Okay. And now the topic is just like what is React Basic and stuff. React Basics. I had taken help of GitHub Copilot. Okay, you have used a GitHub Copilot, bro. If you are using a GitHub Copilot, you know that sometimes it gives a good code, but the problem is just like you don't use your actual skill because I just feel ki I also use a Copilot in my building web application, but sometimes if no one is just giving me any AI tool, so it's struggling to code. Okay, just like if you are also learning a month stack, so it's okay. You can use it with GitHub. I'm just suggesting to you if you are watching that streaming, if you are a beginner, just avoid the code, avoid this type of extension in starting stage because they just like if you have to know if you don't know that loop and it will suggest you a code so how can you use your brain in that code na so just like कि starting में avoid ही करो बाकी it's okay मैं भी use करता हूँ but you have to just at least know the code that is written by a GitHub ठीक है तुम्हें पता होना चाहिए कि actually वो write क्या कर रहा है ठीक है just not be a vibe coder and what is in React so, okay so I'm just preparing for according to the interview ठीक है so just suppose it is an question that a interviewer asked me, what is a React? ठीक है? If you are in an interview and just suppose interviewer asks you a question, what is a React? So what is the simple answer you have? The simple answer is you have a React. React is a JavaScript
library. Okay, that use it's a this नहीं just like a library. I use a front end. Okay, so I just write that as a JavaScript like JavaScript. Okay, okay. By the way, I'm also a student and I'm learning. So just like use your method to learning whatever technology you learn because just like don't so dependent on ChatGPT on AI tools because you know that if you dependent it so much you can stop your thinking, your ability because in future only this thing is matter. Now your thinking ability, how you think and how you solve a particular problem. If you're using an AI tool, you just can't use your entirely potential of your brain. Just use AI tools in limited. Okay. If you know that what would actually do, you can surely use it. But if you don't know, just don't use it. It's the React, the Java, script, frontend, FRONTE, JavaScript frontend library used to build single page web application. Okay. It used the use XML. It's like React is a JavaScript frontend library used to build single page web application. React used component based architecture. ठीक है. React is a JavaScript frontend library used to build single page web application. React used component based architecture. ठीक है. And simply I just copy this and use the chat GPT to just make sure is I am doing a right definition or a wrong. So I just simply go into the AI tool to get it, that AI tool, and I just go to the new chat. Okay, and you can see that I created a thumbnail using this chat GPT. Okay, so you just need to know how to use your creativity to build anything using AI tools. Okay, so let me just. I think I will. Yesterday I just creating a prompt so they'll be understand that. So here I just simply use this. Hey chat GPT. Now interviewer asked me a question, what is React? And here is my answer. React is a JavaScript front-end library used to build single-page web application and it uses a component-based architecture. Okay. This is a very basic answer and I simply write it and send it to the AI tool. By the way, I just given prompt to make the mistakes and just fix the issue. So I just make sure my answer is almost correct, but they still give an error. Okay. I believe that it will give at least a one error. At least a one error. Hi, hi. I am getting error in my project when I reload it to show 404 notes. Found help me. Okay. So, okay, I will help you, but just can you just tell me if it will give an error on which problem is like problem capture in project में. Because if you are just facing a problem, just go to your uh, terminal and go to your console and just check from where the error will come. Okay. And also make sure that is your project has any coupling and cohesion because coupling is the most important thing most of your code give an error. Okay, so you can see that here is like key. Now just simply go it and let me just check that how it's give me an answer. Okay, your answer is correct. Just need a cohesion, confidence, and structure. You can simply see that my answer is correct. If I'm go to the interview and give this answer, if it is still right, but they just give me ki your original answer is just like React is a JavaScript front-end library used to build single-page web application, and it is a component-based architecture. Okay, it use it used me too short and too no clarity about why React is popular. So here is the answer. React is an open source JavaScript library used for building user interface, especially single page application. It is developed by Facebook.
If I just using a front end, so that's will still correct answer. Na? React is a JavaScript front end library used to building user interfaces, है ना? Used to used to building user interface, ठीक है? And this is the answer. We have don't copy the entire answer because if we just type it, we should understand the clarity. Okay. Stick there. When I log in it, when I log in it, it will work very fine. After login, in when I reload it, show me an error. Okay. So error क्या दे रहा है तुम्हें? जैसे you can send me an error कि error क्या दे रहा है थोड़ा because it will be a so many chances कि तुम्हारे route में error होगा और तुम refresh कर रहे हो and if you have building a code application so you have just pass the cookies to your JWT. What I'm saying just like कि तुम्हारा जो JWT टोकन जनरेट हुआ था तुमने उसको cookies में पास किया था because तुम उसको जब रिफ्रेश करते हो तो क्लियर हो जाता है तो दैट्स ऑल्सो अ चांस कि तुम्हारा 404 का एरर आया बाकी तुम जब तक एरर नहीं बताओगे so I can understand that as okay just give me an error okay. And if you just like an any you can just simply go to their Telegram channel and for the discussion you can simply paste your error and just image of that error. Okay, and I just know that ki somebody can help you and after that streaming session I can also just try to fix that error. Okay, Harshita, Harshit, it's Harshit now. Harshit, okay, Harshit, and it is an open source JavaScript library. So I think need to mention it open source. Na Java React is a JavaScript open source. JavaScript open React is a JavaScript popular. ठीक है पॉपुलर भी मेंशन कर देते हैं पॉपुलर ठीक है React is a JavaScript popular open source front-end library used to building user interface and used to build user interface especially single pages application ठीक है user interface especially so I just need to write especially single page web application ठीक है and React we use component based architecture it follow ठीक है so I can just write the answer follow it not used it follow ठीक है it follow because we have creating a multiple component and that package and the project will be completed ठीक है and React we have just using a component based architecture you know that what is component based architecture okay I think you should know that what is in component based architecture okay so here I am and now I'm just moving to the next thing you can see that I will understand the React basic. Here is the setup. Okay. First thing before we have to move to the next step, just think, need to run this code and check that is our React project is working. Here you can see that I just simply zoom it because I think it will be a little font size is very less, so you can't understand. Now you can just it's visible. It's visible to everyone. You can just understand that what is that written in that when I log in. Okay, when I just log in, by the way, you can just simply my code editor is visible to you. Okay, because I just code it there. Okay, I code here of the React. So now can just simply go to the app.css. It is a default. So before removing that entire code, we just simply run our app. Okay, so here's the gym. We just simply go to a CD, and this is a white project. Okay, and now just run the command npm run dev and here you can see that our project is successfully started and I just simply go to that local host and here it is in our application. You can simply see that a white plus में दिया है ठीक है to use white is just like when you are building something so it is used to for a production ठीक है when you not a production you are just building a development ठीक है in development phase we use white ठीक है that's now just here you can see that this is an .css. What happen if I just remove this entire code and see what will happen? You can see that the styling will be removed. And now I'm just moving to .css and remove this code. And let me view see that here now the all styling will be removed from the app.js and
main.jsx. Now just moving to the context. Okay, you can see that app.jsx. This is the data. Okay, I just simply select all and write down RAFC and just enter it. Okay. Before we have to just, we don't need to just like keep pause it because I already know this is the basic thing. If anti-gravity suggests me that code, I'm still, it's not a problem. Okay. So you can see that I skip, and this is, we just simply write out, this is our app component. Okay. Okay. Component. Okay. This is our app component, and here you can see that we go to the main.jsx, and this is an imported app.jsx. We just simply remove this from there, also this, and now I just go to that file, and here you can see that nothing is shown because nothing is we have written in that file, so it would show. So first thing we have need to import the what, we have to import app in there. Okay. So here we just simply import file there, app. Okay, we have to also import it from there. And now we just simply go to that file, and you can see that this is our app component. And it will be visible to our screen. You can simply see that I can zoom it little, and this is our app component. Now I'm just moving to the next step. You can see that in our template we have understand that what is React. Okay. And React is sort of basic. If you want to understand what is basics of React, I can just simply see you a few good examples in that code. Here you can see that uh, file. Okay. app.main.js app.js. Okay. This is our main file. Okay. And it will be connected to the html.js index.html. You can see that a read project, we just simply write down React code. Okay. And you can see that title of that project is changed. You can see that there is a React code, and if I have to remove this icon also, we can also remove the icon. Okay. This is, I think, okay, here's the icon. We just simply remove the icon from this there. And now I just need to, you can see that we have just adding a script.module, and it is a main.js file that is connected to this file. Okay. That root.element. Okay. And you can see that this is a DOM. Okay. This is a document model. Okay. Document object model that will be connected to there. Here is a component, whatever we have in there. Okay. We have just wait a minute. Okay. चार्जिंग ही चली गई थी by the way, ठीक है, fix है. Okay, so here you can see that this is an component that I have just imported from. Okay, and now I just need to understand the next thing because it will be complete. Okay, if you know the basics React, I'm just revising that concept. I'm just not here to just learn everything from scratch because it will be take so much time. If I already know the basics, so why I just invest so much time on this basically? Because I'm just moving to the important thing because in as an interview perspective, they just don't ask you a simple like question. Okay, and focusing on a hard question. So just like we have to focusing fast. So we just tomorrow we revise the most important thing in the React. This is an recap. You know that hook is what is hook. Mhm. And this is it will be done. And next is JSX. ठीक है, JSX में बड़ी चीज नहीं है. JSX is a JavaScript extensible markup language, JavaScript extensible language that provide you to write a HTML code in your JavaScript. Okay, that's it. I just go to that chat GPT. I just go there and just ask it. In the next question, interviewer asks me a question, and the question is just like, what is a JSX? And here is my answer. JSX is a JavaScript extensible language that is used to write, that give a functionality to write a HTML code in JavaScript function. Okay, here I simply use this. I just simply write it.
And let's see what it's given answer. Okay. You're understanding the concept, but your sentence structure is breaking. Let me fix it properly. That's the reason. That's why my English is broken, and I use the live streaming every single day to just like how much React you should learn. You don't need. You just hello, hello Rajan Singh. Hello, hello. Welcome to my stream. And I just want you, if you have to just bring, if you are just asking me a question, how much React should we need to learn? I just simply go through with that context, okay, and I hope think this is the enough. If you have learning a React, you just need to go. I just show you that what if you know what is JSX, what is a component, what is prop, state, event handling, conditional wrapping, and list checking. This is the most important topic. If you know this thing, you know almost 50% of React. Okay? And here is the hook. Okay? And hook. This is an important hook. Okay? If you know the how to use state, how to use different dependencies, ये क्या होता है, what is it, use reference. If you know this hook and if you know this advanced concept, you can what is component life cycle, life lifting state of control and uncontrolled component. If you just like you to control your form, so that's it. Okay. And here you can see that what is the prop really REST API. ठीक है, तो हम API को route कैसे काम करता है, that's it. ठीक है, this is the three basics. If you know this thing, this React is enough. And if you want, I just give you a good resources to learning a React. So I just use the virtual code YouTube channel for learning React because it will created a one shot React. I'm using this for the revision because the teaching method of that creator is actually so good. So if you are a beginner and if you are okay to learn in a basic and simple easy, so just follow the virtual code YouTube channel. It will created a React video, and the length of that video at least I think 7 hours. So it will be not so much. So you can simply watch it. Okay, watch it to learning a React. Okay, who is calling me right now? Just wait a few seconds. Just wait a few seconds. I will be back soon in just 2 minutes. Just wait. For the interruption, but I'm back. And the actual problem is just like sometimes the call is important, so I just don't click it. I need to attempt it. Yeah. So it's okay. But I think for the next time I need to put the phone in silent because it just ruin our focus. And the focus is everything. If focus is lost, everything is just lost. Okay? Because it will then it take so much time to just be focused. So let me just see you what comments you have. ठीक है bro. Your CGPA and your college. Bro, देखो my current CGPA is 7.8. Okay. I think 7 point. My CGPA is between 7.8 to 7.5. I'm not completely sure because
my some subjects marks is not updated yet. दिसंबर के अभी अपडेट हुए नहीं है। मैथ्स जो है मेरी वीक है, तो मैथ में मेरी बैक थी, ठीक है, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, इसमें बैक थी, तो मैथ्स का एग्जाम अभी निकलेगा, फिर पता चलेगा एप्लीसीजी में क्या है कि ये 7.5 से अबव है, ओके, 7.5 से अबव है। एंड इफ यू जस्ट डोंट आस्क मी योर कॉलेज बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन इट, आई एम लर्निंग फ्रॉम अ डिस्टेंस कॉलेज, ओके, डूइंग अ बीसीए फ्रॉम डिस्टेंस कॉलेज because I know that BC is not enough to getting a job. At least if you're getting a good opportunity, so you're doing a BC, then MCA, then you can just thought कि तुम्हें एक अच्छे portfolio मिल सकता है. So that's why I'm just doing a BCA from distance, and I'm preparing for a good exam for a good MCA college. Okay, it's okay. And कहाँ पे थे हम? We have just like कि, and you just Rajan, you can ask me a question. What is React? Okay, and how much is enough? So you can see, I can also see that this three topics is enough to learning a React. Okay, if you know these three concepts, what is a core, okay, what is a hook, and advanced concept. And this is an AP integration. If you know these three things, you will know the entirely React. Okay, because then you just simply jump to the Next.js because Next.js is also a advanced version of React. So just don't go so too depth in React. And also revising it because currently I'm also learning a Next.js. Okay, so I don't go too deep in Next.js. Okay, so I just simply go there, and here you can see that I just giving an answer. JavaScript is a JSX, the JavaScript extensible language that is used to write that give a functionality to write a HTML code and prompt. Okay, JavaScript extensible language, wrong full form. JavaScript extensible. Okay, it is a JavaScript extensible. Okay, and here is the answer. JavaScript stand for JavaScript XML. Okay, so I can hear that write the answer, write the some basic notes. So if I'm just repeating next time, just feel the content because we have just taken up one revision. We just taking if we have revised this concept 2 to 3 times, we will just feel the confident and we can just simply tell the anyone who just ask me. Okay, so you need a repetition method. As you can see that I use this create a Notion template to just revise my concept. I'm just starting this from last month. So I think this is very helpful. Okay, if you just need to remember anything that is important, you just need to revise it again and again, 4 times, 5 times. You just doing it repeatedly, you will understand it, and this storage will be stored in your brain, in your memory. So, yeah, don't just learning and just moving to the next because if you can't revise it, it is a waste of time, and I waste almost 1 year from there. Just okay. JSX is again JSX stand for. Okay, it is an JSX stands for. Okay, JSX stands for J Java JavaScript XML. ठीक है, and here is the next thing is just like it is a syntax extension for JavaScript. ठीक है, it is a syntax extension. ये तो पता ही था बाय द वे, ये तो बेसिक चीज थी एक्सटेंशन. अगर मैं ये बोल देता तब मेरे को ये बोलता कि इट विल बी अनदर थिंग. दैट्स व्हाई द चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक किसी का सवाल नहीं है, कोई भी कुछ भी बोलता है, यू आर जस्ट लाइक कि ज्यादा प्यार से बात करना तो द आंसर विल बी डिफरेंट, and if not, it will be different. Okay, this stands for JavaScript, and it is a syntax extension. It is a syntax extension, no? Syntax extension for Java. Okay, and that allow us to write. ऐसा ही था by the way. My answer is also related to that, but it will not correctly. ठीक है, JavaScript. ठीक है, that allow us. ठीक है, that allow us to write a HTML code like HTML, write HTML like code inside JavaScript. ठीक है, write HTML like code inside the JavaScript. ठीक है, we don't need to write it full form. ठीक है, here you can see that we have also learning a JSX right now, and the what is JSX? JSX is like a simple definition. I can simply say a JSX stands for JavaScript XML. ठीक है, JSX stands for JavaScript XML. It is an JavaScript extension. It is a JavaScript. It is a syntax extension. ठीक है, not a JavaScript. It is a syntax extension
for JavaScript that allow us to write HTML like code in a JavaScript. Okay, I got it. I understand that. Okay. By the way, nobody is just asking me a question right now. By the way, 9 viewers are just watching my streaming. And no one just asking me a question. And by the way, if you are watching that streaming session, why you nobody just like this streaming? Because currently I have only a one viewer. Is there any problem? Is it like any problem just like with me? Because it's like a viewer is currently 919 is watching and just like is only one. So just like this streaming session. Okay. I can just simply check the first thing that I just need to check that is YouTube sharing enough impression to my YouTube videos. Just need to go to the content and live streaming, and here it is an analytics, and let me just check to make sure. Okay, it will sharing the impression. Okay, it will sharing impression, no problem. Okay, everything is going fine. Now we're just moving to the streaming. Okay, so now our JSX is also completed, and here we are in our code editor, and you can see that main.jsx file. Okay, now we have just go to this, and the next step is component. And let me just understand what is the component. Okay, component क्या होता है? So we have just go to our code editor, and here you can see that this app is a component. And if we just like this is a default, this is already built in. So now yes, you have to creating a new component and pass it to the main. Okay, so I just simply go to white project. Here is the sets, not a SRC. Okay, in SRC we have creating a new file. File name is just like user, not a user is like user.jsx. Okay, and we just simply write a RAFCE. Okay, if in command, they're just simply creating a React JS boilerplate, and we just simply enter, and the boilerplate is created. Now we just simply write down this is the use. This is our user component. Okay, and now we have to simply go to the main.jsx, and after app we just simply import it here. Okay, and now we have to also import it from there. This now whenever we simply go there, you can see that this is our user. Our user component is also getting from there. Best laptop suggestion. I bro, even I thinking of doing. What are you doing? What are you doing? Bro, I am just revising our React. Okay, our React concepts. Easy, that's okay. Yeah, just like you know, मैं कर क्या रहा हूँ, so I just simply this is my live streaming session. I just revised the important concept next to the merge tag. Okay, if you are learning a web development, this video session is beneficial for you because I will be just revising the most important topic related to the interview, related to the project. Okay, okay. So if you are still don't understand what I am doing, so I can just simply creating a one video, separate video that what I can do in the what I actually doing in the live streaming. Okay, because most of the viewers is starting to understand that what I'm actually doing in the streaming session. This question is very common. Okay. Just like I'm learning public and just use the live streaming method to revise the concept. That's it. Okay. Best laptop suggestion, bro. If you have to buy a best laptop, so first thing you have need to decide your budget. हाउ मच वो तुम्हारा बजट क्या है रेंज बताओ उसके भी आप पे आई कैन सजेस्ट यू अ बेस्ट लैपटॉप ठीक है बाय द वे आई एम जस्ट यूजिंग अ Victus okay it is an HP Victus laptop and the RAM is just like RAM अच्छी है ठीक है मतलब 16 GB है ठीक है 4050 RTX है बेसिक कोडिंग अच्छी हो जाती है ना RTX 4050 का ग्राफिक कार्ड जरूरी है कि कोडिंग अच्छी हो everyone is agree with my words है ना graphic card is so much important to doing coding by the way 4050 3050 and so here we have this go. Basic is completed, components is completed. So that is a component. And if I just need to answer of that question, if just anybody is asking me what is a component, okay? First here
Okay. First year, second sem. Okay, bro, you are from first year and you're doing a BC or a BTech or a BSc. You are doing any computer science related course. So you are doing a BC or a BTech. And now the next thing is just like they give me a question of what is component. Okay. And I just need to getting a good answer of what is it actually a component is. Okay. So let me just do that. A component is just like कि देखो, I'm also struggling कि if you are also in interview and they just asking you a question, what is component? Okay. So तुम्हारी best definition क्या होगी? Because you can also explain the code कि एक component होता है, component को बोलते हैं and we have this building a full application. ठीक है. But इसमें तुम्हें क्या करना होता है? But definition is should be different ना. So first thing I just write down in my notes. Let me just view it. Okay, you are doing the BTech, bro. Great, bro. Great. BTech कर रहे हो ना? By the way, everyone is doing a BTech or a BCA in a computer science. If you're from computer science student, most probably you're doing a BTech or a BCA. So, are you deciding which career you should choose? You have to go into development or cloud engineering, backend, CI/CD pipeline, data analytics, data science, data analytics, generative AI, AI engineer, ML engineer, SRE. What are you thinking that? If you have just thought, if you are currently in first, second semester, I think you don't need to learning how web development. Okay, just don't spend so much time on web development because the market is so much crowded. Okay, बहुत saturated हो चुका है web development. Especially month stack. So just if you are in initial stage, learn a development basic necessary चीजों को समझो and just move forward. Okay. Okay. What is the correct definition of component? I'm still finding. I can use a chat GPT, but just know that I will write it. It is a good thing if I just use the definition that is written by mine. So I just read away. So, okay, where is the component? If you know that if your interviewer asks you a question, what is an component? So what is your answer? If anybody is asking you a question, what is an component? So what is your answer? You don't need to use any AI tools. Okay, you just need to give an answer. If you know the answer, just let me know in the comment section. Okay. Giving you an answer. Okay. Answer is just like simple. What is a component? If we're writing a function, okay? If we're writing a function in a JavaScript and the function is written in, you'll be using a first capital letter is small. If it is small, it will be treated as a function. Okay? It will be treated as a function, but the letter is capital, it will be treated as a component in JavaScript. Okay? Yes, please suggest what I am doing right now for my career place for good job placement. So, if you are targeting a good placement, ठीक है, ठीक है, and you want कि good job मिल जाए, good job placement मिल जाए, so first thing तुम्हें क्या करना है? अभी से अपना जो एक टेक्नोलॉजी है मर्ज स्टैक उसपे कंप्लीट कर लो, ठीक है? जस्ट डोंट वेट टाइम की टाइम लगाऊंगा, जस्ट मेक श्योर एक डेडलाइन फिक्स करो, 3 महीने 4 महीने में काफी, डेवलपमेंट में 3 महीने काफी है, एआई आ चुका है, तो तुम्हें उतना हर चीज मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समझो कि जो एआई टूल, एआई वर्ड से एआई कोड लिख रहा है तुम्हें वो समझ आना चाहिए, ठीक है? एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट कि वो क्या लिख रहा है, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद हैकाथॉन ज्वाइन करो, ज्वाइन हैकाथॉन, लर्न इन पब्लिक, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली what you are learning, share on LinkedIn, share on Instagram, or share on Instagram or a WhatsApp. Well, not WhatsApp, just like use and or YouTube. Okay, you need to show your skill, what you are learning. Okay? And those viewers who are just watching my video, I have just one thing: learn in public. ठीक है? Just like कि जो दिखता है वो दिखता है. देखो, I will just watching the one thought कि ना मेरे को ऐसा लगता है what skill you have, ठीक है? If nobody know you, nobody, कोई तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम्हारी स्किल का पोटेंशियल क्या है, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है? एंड इस क्राउडेड मार्केट में तुम्हें अपॉर्चुनिटी खूब ढूंढनी पड़ेगी, सो लर्न इन पब्लिक इज अ गुड मेथड। और अभी से तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, अभी से लर्न इन पब्लिक करना शुरू कर दो, ठीक है? बट मान सपोज करो यू आर लर्निंग एनीथिंग टुडे, ठीक है? Just creating a notes and just
post it on a LinkedIn or just share your journey. That's it. ठीक है भाई क्या करना है भाई what do you think having a theory knowledge is better or like you are completely any work better using AI or with your knowledge is better तो देखो I'm totally agree AI use of AI is the best option ठीक है if I'm just like yeah मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि I'm just doing a manual coding and getting finished this is the time we just now outdated ठीक है most of the task will be automated using an AI tool totally agree but the thing is that if you are a fresher ठीक है and if you're learning any technology and you use AI tool ठीक है तो what about your थिंकिंग एबिलिटी उसके बारे में सोचो ना थिंकिंग एबिलिटी के बारे में अगर तुम डिपेंडेंट पूरी एआई पे हो जाओगे तुम अपना दिमाग यूज नहीं करोगे तो तुम्हारा काम तो फास्ट हो जाएगा वो ठीक है लेकिन फिर तुम सीखोगे कैसे एक्चुअली वही चीज है ना इसलिए थोड़ा मतलब एआई को सीखो एआई भी यूज करो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो दैट कि एआई वो कर क्या रहा है I was just like most of my friends who just not my friends. I'm also talking about myself. Building a full stack project using an AI tool. You know that vibe coding is so booming right now. Vibe coding, okay? You just simply need to write prompt and it will give you that entire application. Okay? This is the vibe coding. But you just need to learn if you don't know the how that application works तो कैसे काम चलेगा तो जस्ट लाइक कि तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है ठीक है एक्चुअली में वेब एप्लीकेशन बन कैसे रही है तुम्हें पता नहीं है एपीआई क्या होता है तुम एपीआई में तुम फ्रंट एंड बैक एंड बना रहे हो सेंस नहीं बनती ना सो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो तुम लिखवा रहे हो तुम्हें बता दो तो एआई का यूज करो बट मैनुअल कोडिंग तो वैसे ही बेकार है ये तो जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू बिकॉज इफ यू गोइंग फॉर इंटरव्यू सिटिंग इन द इंटरव्यू they just asking you a question what is that you can't just give my answer कि I building this web application using an AI tool well fresh you just need to learn something na so can so you can express your thoughts your answer best ठीक है But just like I want to also well, I want to tell you one thing that's like, did you understand that what I'm trying to sing to you? Because I'm using this training session to just improve my communications and my English speaking skills as well. So I just using this method. Okay, okay. My voice is not clear. Okay. I think this is the actually real problem. So I think I need to use the mic now. So I will just like keep. I'm using this mic, but I अभी ये contest में मेरा mic लिया and I use that मैंने voice record भी करी थी. Voice quality is just like not so much good because I just simply remove this and use this Jugaad to a clear voice again. And if you just like the voice is clear and improved, so you just let me know in the comment. Hey bro, what's your name by the way? My voice quality is okay when I just use this. ठीक है. And no, I have very creative idea and I can't do my work using with this AI tool. हाँ तो it's a good idea, it's a good thing if you know that देखा 2026 या कुछ भी हो तुम्हें पता होना चाहिए एआई टूल को इफेक्टिवली यूज कैसे करते हैं ठीक है इफ यू नो हाउ टू यूज एआई इफेक्टिवली दिस इज द बेस्ट स्किल ठीक है एंड मेरे को थोड़े क्लाइंट भी आ रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए ओके ब्रो दैट्स मीन यू डूइंग सो ग्रेट दैट्स अ गुड थिंग बट यू हैव जस्ट लाइक कि इतना चीज याद रखना कि एआई से जो भी काम करवा रहे हो तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि काम चीजें कैसे होते हैं ठीक है बाद में प्रॉब्लम आती है okay thanks bro I just I am just saying a thanks like कि my voice is now clear na I oftenly use this mic but the problem is just like you can see that I just use this I'm just rolling the wire into my ear so that this mic is close to me so the voice is okay clear and I just need to speak so fast because the mic is just like jugaad okay so I'm just like I'm a student I don't just I'm a professional content creator so I just afford the mic or a clear stat setup you can also see that the quality of that my video my face is also looking so blurry because I can't spend so much time on that on streaming I just learn in public and if I just think go well I will just thought कि क्या करना चाहिए है ना अभी सही वॉइस आ रही है क्लियर ओके
My voice is clear and you understand everything clearly. Okay. So you are just Arctic 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 D3 dev. You just said कि you have getting a client using the development. ठीक है. You are doing a web development. BTech plus जुगाड़ is really बाय द वे मैं बीसीए वाला हूँ लेकिन बीसीए वाले भी जुगाड़ कर लेते हैं थोड़ा वो सीख लेते हैं वही है वो बीटेक से ही जुड़ के आए हैं हम भी कहते हैं ना बीटेक वैसे जैसे लाइक कि बीटेक तो है भाई बीटेक का अलग हो रहा है ओके बीसीए का अलग हो रहा है हम्म, ठीक है यू कैन कॉल मी स्ट्राइवर ओके आई कॉल यू स्ट्राइवर ओके स्ट्राइवर ओके ओके ब्रो आई जस्ट सॉरी टेक ऑफ यू आर जस्ट लाइक अ मैक एयर वर्सेस एचपी विक्टस ब्रो गो विथ मैक एयर ठीक है विक्टस इज अ गुड लैपटॉप बट द बैटरी कंजप्शन इज नॉट सो मच गुड ठीक है सो आई थिंक यू जस्ट गो टू द मैक ठीक है मैक ले लो मैक का बैटरी बैकअप ठीक ठाक मिलता है तुम्हें लाइट वेटेड रहता है अच्छा है मतलब मैक इज बेटर देन अ विक्टस ठीक है आई यूज विक्टस बट आई कांट सपोर्ट इट इफ इट विल इफ कंपैरिजन टू मैक Yeah, मैं तो BCA and now I am doing MCA second year. Oh, you are doing MCA in the second year. So, bro, Striver, just let me know that one thing that you are doing a MCA and this is your final chance, I think. This is your final opportunity, ठीक है? Because after the MCA, you just have a two option only. You just get a your startup or getting a job, ठीक है? तुम BCA कर चुके हो तो MCA कर रहे हो. So, how many internship have you done? Are you in a MCA? So how many internship have you done? Or are you just looking for another thing? Because I just see so many things who just learning, doing a BTech or a BCA, and they just find a good opportunity in another domain. Hmm. Wow. Component की definition थी just like कि चलो एक काम करते हैं now it's time to ask the chat GPT कि what is an exactly definition of component is. The interviewer asked me a question, what is a component? So give me a simple, easy, structured answer of that question. I'm just preparing for interview. यार interview में मतलब I just they give me an assignment to building a project. ठीक है? In the last interview, just like कि एक दो हफ्ते पहले हुआ था, and they just give me to building a school canteen management system, and I build completely using anti-gravity code editor and I just give that assignment ठीक है after that they just taking my interview ठीक है they just don't ask me how you can build it what is that function they simply ask me a question related to that how what is that and I just struggling कि मुझे लगा उनको लगा implement करने के लिए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं we know that it's a good thing to use an AI tool but you need to know what the exactly it's app you have built सो तुम्हें आइडिया भी नहीं है और तुमने बना दिया तो दैट्स व्हाई रिजेक्टेड सो इसलिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ ठीक है या आई डिड टू वन इन फ्रॉम दुबई इट वाज अबाउट N10 and second one is of a front UI developer where I go to learn about Next.js and React.js with the help of AI and I have the best among all of the intern. Oh, that's awesome, bro. That's awesome. That's actually great thing. Okay, and just like you are working on Any10, Any10 is just like a AI automation tool and AI agent, na? That you can just automate your workflow, a repetitive task, and that give to the AI. No code. I think we have should not need to write a code to using an Any10, है ना? 0.35 dollar means the just I'm just giving a score myself on every streaming session or every consistency. I just giving a score to myself, and this is just like okay. Abhi it will be getting a $1, $2, but after that I will be just getting my first internship or a job. This will be the amount will be more than this. Okay? So that's it. I'm just giving you this to as my reward point. So in every live streaming, I just getting 1 cent or 3 cent.
So just like a reward ratio, ठीक है, because I don't have any output using this streaming session, so I just make stupid myself. That simple answer मैं ये बोलूँगा. Where to get freelancing client? Neeraj Ramayuni, you have just asked me a question, but how to get a where to get a freelancing client, ठीक है? Great question, but I just give you a honest answer, ठीक है? You have watching so many YouTube videos. You have watched a lot of Instagram reels where a just creator just simply say that you just need to create an account on LinkedIn. You create a Upwork or a Fiverr, and you just simply push your work, your portfolio, and you just send a send a just like cold emailing that's doing this thing blah blah blah, and you have to getting a client. This is exactly a bullshit. The first thing that competition is so high on a freelancing, so you need to approach from your side, ठीक है? अपने लोकल क्लाइंट, लोकल आसपास के जो क्लाइंट है उन पे फोकस करो, ट्राई करो, ठीक है? और थोड़ा बेशरम बनो, ठीक है? तुम्हें अगर क्लाइंट चाहिए ना, थोड़ा बहुत बेशरम बनना पड़ेगा. The first I found some problem that can be fixed with the software. Then I plan what exactly we can make, and I ask AI for more stuff. I just code it with AI to make it fast. Yes, Any10 is for automation, and I suggest that everyone should use it and learn it. Yeah, I know I use Any10, bro. I use Any10 for the last 6 months. I have creating automation tool to automate a LinkedIn post. I use that tool to build a LinkedIn post, and it will created the flow is okay, but the post will be generated. It's not so good. So I just don't use it, and I just like कि छोड़ो उसको. एंड अगर अच्छी इमेज चाहिए, सो आई जस्ट यूज गुड एपीआईज, ठीक है? एपीआई के इंटीग्रेशन करके साथ गुड इमेज आनी है, फिर उसमें थोड़ा पैसे वैसे लगाने थे, तो आई जस्ट लाइक कि छोड़ो यार. और फिर एक थोड़ा ये भी रहता है कि तुम्हें डिप्लॉय करना पड़ता है. सो अच्छी चीज़ है, बाय द वे, आई जस्ट एक्सप्लोर इट, अच्छी चीज़ है काफ़ी. इफ़ यू नो द एनी टाइम यू हैव नो द जेपियर. जेपियर भी यूज़ करा है मैंने. जेपियर यूज़ किया तुमने? उसका मैंने एक वर्कशॉप लिया था, पैसे बर्बाद हुए थे बाकी. Component is like, what is the simple and let me, okay, I think the answer we have just received from the chat GPT. A component is a reusable piece of UI in React. पता था ये आंसर, मेरे को दिमाग में नहीं आया. I'm just busy in the streaming, so I just forget it. It is a JavaScript function or a class that return JSX to display UI, ठीक है? And here's a simple answer. A component in a React is a reusable piece of user interface, ठीक है? Simple answer. A React in a React in a component in React, a component in React, ठीक है? A component in React is a reusable piece of user interface, because you can simply see that I have created a one component, ठीक है? And I use this. I think it is a waste of time. If you try to answer every chat, go ahead and learn what you need to, I guess. Yes, I'm just, but देखो, but I just tell you the one thing. I am go live on the evening, ठीक है? And the main reason is just like why I'm going live on evening, how I can improve my speaking English. देखो bro, the first thing I just need the answer of Pratham Singh, so that's I can jump to the tech craft. ठीक है? And I just like कि you can also mention your name, so I can just use tell you using your name. ठीक है? Arctic 6, you just tell me a name of striver, so you can just tell me your name. If I just remember it, I use that. ठीक है? Or just like, I think the waste of time is just like if I'm doing this streaming in the mid of the day and I don't learning. ठीक है? First thing, I have completed my study before 6 p.m. ठीक है? शाम के 6 बजे से पहले मेरे जितने भी होती है टॉपिक्स, आई हैव वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, ठीक है? अपने कॉलेज के असाइनमेंट पे भी काम कर रहा हूँ अभी, एंड उसके बाद एक फाइनल ईयर का सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम कर रहा हूँ, ठीक है? उसका मैं ट्यूटोरियल देख के थोड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और नेक्स्ट जेएस भी सीख रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी मतलब जिंदगी के लगे पड़े हैं, जस्ट फोकसिंग एवरीथिंग ऑन टू जस्ट ग्राइंड चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है? कम बैक इस साल हो जाएगा, लगता है शायद हो जाएगा, ठीक है? हो ही जाना चाहिए बाकी, क्या डू एंड डाई वाला सीन है. सो
ये चीज़ है, तो मैं पहले खत्म कर लेता हूँ, ठीक है? तो अगर अभी मैं आता भी ना, अगर मैं स्ट्रीमिंग कर भी रहा हूँ, थोड़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ, कुछ बातचीत भी कर रहा हूँ, तो जैसे अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करता हूँ और जस्ट कम्युनिटी से बात करता हूँ। सो इट्स ओके कि सम टाइम अगर मैं कोड करके बात कर रहा हूँ, तो मैनेज हो जाता है वो। बाकी थैंक यू कि क्योंकि तुम सोच रहे हो भाई मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहे हो भाई तुम मेरे लिए कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। थैंक्स ब्रदर, यू आर जस्ट केयर, यू केयर मी सो मच। तुम्हें केयर है मेरी बाय द वे। एंड यू हैड टेक अ कैन यू जस्ट मेंशन योर नेम ब्रो? कैन यू जस्ट सिम मी मेंशन योर नेम? So I using a name, I can just tell you what your exactly name is. And by the way, I'm just creating a WhatsApp community channel, ठीक है? You can simply join it there. And if you have to ask me anything question, I just also created a Telegram channel, a public Telegram channel where you can learn and just creating a community, ठीक है? वो एक community build होगी जिसमें तुम आपस में एज रिलेटेड तुम टैग में क्या डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक अ लर्न इन पब्लिक। डिस्कॉर्ड भी हम डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी काम करेंगे, ठीक है? एंड द ऑडियंस इज नॉट सो मच राइट नाउ आई हैव सो, ठीक है? ओके रोहन कुमार, ओके। सो योर नेम इज रोहन एंड रोहन देखो, इफ यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है, फर्स्ट थिंग आती है, यू हैव व्हाट, तुम्हारा इंग्लिश का लेवल क्या है अभी करेंटली, ठीक है? आई एम जस्ट टेल यू दैट माई आई एम नॉट सो गुड इन इंग्लिश, ठीक है? I can simply tell you the honest answer. My English is very bad. I'm not good in English. And the main purpose of this streaming session is just I use it to improve my communication by just speaking a lot, because in real I have just practicing so much grammar, so much sentences, I have remembered it everything. But the first thing that if I can't speak it, there is no another way to improve the communication and the English speaking. So just speak, ठीक है? टूटा फूटा कैसा भी आ रहा है, just try to speak English and just fix it day by day, ठीक है? So after the 3 months, 6 months, you are not the top of the computer, but you are just still bad, you are better than yesterday, and it will be getting 0.01% improvement, and at end of the 3 to 6 months your English will be improved so much, okay? Because currently my English is not so much good. If a viewer who just watching and they have a good English they have a good English, so they will also understand that, okay? Okay, so they will also understand that what I'm trying to say, and I showed that I'm doing some little and slightly grammar mistake, ठीक है? There is so many chances कि मैं थोड़ा बहुत slightly grammatically mistake कर रहा हूँ, but I'm still speaking, ठीक है? And you just say you are a best English. Thanks bro, thanks Rohan. I just feel कि अच्छा लग रहा है by the way, but the thing is just like कि you have to just try, ठीक है? Try is the only method. नर्वस हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, जस्ट स्पीक, ठीक है? अभी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मेरे को पता है बहुत सारे वर्ड्स गलत भी होंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत होंगे, बट द एग्जैक्टली ट्रूथ इज इफ यू कांट स्पीक इट, यू कांट इम्प्रूव योर इंग्लिश एवर, ठीक है? सो जस्ट स्पीक लॉट, वॉच द कंटेंट इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, जस्ट मेक योर सेल्फ कि मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, बात खत्म, टूटी फूटी बोलूंगा एंड इम्प्रूव करूंगा इसको, ठीक है? काम करो, फिक्स करो, काम करो, फिक्स करो। दिस इज द सिंपल प्रोसेस टू improve yourself in anything. This is the simple rule you need to follow. You just need to work on that thing, fix it, again work that, fix it, and the mistake will be reducing time by time, ठीक है? ब्रो मैं भी फिर से वाईटी पे आने का सोच रहा हूँ, बट हाउ इट्स बोथ गो लाइव एंड मेक क्रेजी प्रोजेक्ट ऑन लाइव? Yeah, we can discussing in that thing. By the way, this is a good idea to just getting a live streaming where to learn a phrases tell, ठीक है ब्रो? देखो, if you have to learning a phrases, please tell me you learn, तुम्हें लर्न करना है, देखो सबसे बेस्ट थिंग बताता हूँ मैं तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारे बेसिक बहुत इंग्लिश आती होगी। फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्निंग, यू हैव टू लिसन सम इंग्लिश वर्ड, ठीक है? एंड अगर तुम अभी जस्ट मूविंग टू एडवांस, आई थिंक यू फेसिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है? सो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, बाय द वे स्ट्राइवर जस्ट होल्ड ऑन अ 1 minute, आई विल जस्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक ऑल्सो, ठीक है? सो आई जस्ट सिंपली go to that YouTube channel, ठीक है? By the way, Perplexity is also a good browser, but I don't use so much. I just use this because it will just, you can't need to watch then episodes by what my bad. You don't need to watch ads because they just remove the ad blocker, ठीक है? And we just simply remove that, ठीक है? So you can see that this is on YouTube channel English Avenue, ठीक है? This is not a promotion video or anything. English Avenue, ठीक है? They will just posted a video related to a self improvement, related to good story, ठीक है? So I just need you to just follow this YouTube channel and watch at least one video every single day and try to tell with that, ठीक है? जो वो बोल रहा है उसके साथ बोलो, और जो जो ये सेंटेंस फॉर्मेशन होता है इट्स वेरी इजी, ठीक है? सो यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक, एंड जो वर्ड तुम्हें समझ नहीं आ रहे, जस्ट राइट डाउन इन नोट योर नोटबुक, एंड
find the meaning from the chat GPT and that's it, ठीक है? This is the only thing, ठीक है? My condition is I understand your English, ठीक है? ओके, यू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश, दैट्स मीन अब मैं भी कह सकता हूँ कि मतलब ठीक ठाक है, खराब भी नहीं है, माई इंग्लिश इज नाउ ओके ओके। तुम्हें समझ आ रहा है, दैट्स मीन आई जस्ट मेरा मेरा दिन बना दिया तुमने ब्रो, यू मेक माई डे, सिंपली यू मेक माई डे, जस्ट यू टेल मी दैट आई यू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश, ठीक है? यू जस्ट मेक माई डे ब्रो, थैंक्स ब्रो, थैंक्स, आई फील वेरी गुड। एंड देखो ब्रो, आई जस्ट सजेस्ट यू दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है? इंग्लिश एवेन्यू, you just go to that playlist or a video and just watch one video every single day, ठीक है? Watch one video every single day, and whatever they tell in that video, you just need to speak with that, ठीक है? They will tell you very slow, ठीक है? बहुत धीरे धीरे बात करता है, ठीक है? You just धीरे धीरे मतलब बताता है, और they will provide a good value content, ठीक है? If you are watching one video every single day, in the next 30, in that only 30 days, your life will be changed, ठीक है? Just like why I'm saying your life will be changed, because they will not talking about the motivation, they just talking about implementation. If you have to achieve anything in your life, you know the what the system you need to follow it, ठीक है? what the implementation and what the task you need to implement, ठीक है? तुम्हारी implementation क्या होनी चाहिए, तुम्हारा सिस्टम क्या होना चाहिए उस चीज को अचीव करने का, so this is talking about that thing, ठीक है? और प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा बिलीव करता है, so दैट्स आई कैन फॉलो यू, फॉलो दिस यूट्यूब चैनल एंड जस्ट वॉच इट, ठीक है? तुम्हारी लिसनिंग एबिलिटी भी अच्छी होगी, एंड योर टॉक एंड लिसनिंग तो अच्छी होगी तुम्हारी, ठीक है? रीडिंग भी तुम्हारी एबिलिटी अच्छी होगी, और तुम्हें ऊपर से तुम्हें वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी, ठीक है? जस्ट नोट कि तुम एक गार्बेज इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम एक वो इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो दैट्स हेल्प यू टू मेक वैल्यू इन योर लाइफ, ठीक है? तो जस्ट यूज, राइट डाउन दिस इंग्लिश वेन्यू, ठीक है? कहीं भी लिख लो मतलब, एंड जस्ट वॉच वन वीडियो एवरी सिंगल डे, ठीक है? एंड स्ट्राइवर ब्रो, यू आर जस्ट टॉकिंग कि यू आर ऑल्सो थॉट कि एक यूट्यूब चैनल बनाओ, सो ब्रो आई जस्ट सेड कि सोचो मत, बनाओ, ठीक है? एंड यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, शॉर्ट फॉर्मेट में इंस्टाग्राम पे भी डालो, ठीक है? कंटेंट डालो, जो भी मेरे व्यूवर, मैं तो कहता हूँ बस लर्न इन पब्लिक करो, ठीक है? कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो, ठीक है? बिकॉज जब तक तुम्हें लोग जानेंगे नहीं, देयर विल नॉट गेट, यू कांट ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो लर्न इन पब्लिक करो, एंड इफ आई जस्ट सेड कि यूट्यूब पे कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ब्रो देखो, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मन स्टैक थोड़ी अच्छी कर लेता हूँ मैं, ठीक है? मर्ज स्टैक मेरी अच्छी हो चुकी है, बाकी एआई, देखो एआई टूल के साथ बनाएंगे तो इजीली बन जाएगी, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज इफ वी हैव टू बिल्डिंग एन एंटायर एप्लीकेशन विदाउट एआई टूल, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है? सो जस्ट लाइक मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ, फिर हम अच्छे से बनाते हैं, ठीक है? बाय द वे, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, तो इफ यू हैव जस्ट एनी वन हु जस्ट लर्निंग अ मर्ज स्टैक, वी हैव जस्ट क्रिएटिंग अ फुल मर्न एप्लीकेशन यूजिंग अ लाइव, ठीक है? लाइव में बनाते हैं ना तीन चार, अब जैसे तुम, एक और बंदा था जो मेरे को परसों मिला था स्ट्रीमिंग में, दे ऑल्सो सेड कि जस्ट बिल्ड समथिंग ग्रेट, ठीक है? सो हम करेंगे, ठीक है? इस पे बात करेंगे, बनाते हैं। बाकी तुम यार, इफ यू हैव जस्ट इज एनीबॉडी हु जस्ट थिंकिंग टू स्टार्टिंग अ कंटेंट क्रिएशन, जस्ट स्टार्टेड ब्रो, ठीक है? आई जस्ट कि आई एम पोस्टिंग अ कंटेंट फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है? 6 मंथ से मैं वीडियो डालता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, बट इन 2026 जस्ट आई विल जस्ट कि क्या होगा इस साल या तो वीडियो डलेगी, ठीक है? वीडियो डेली पोस्ट होगी, द वीडियो विल बी डेली पोस्टेड, अदरवाइज जस्ट लाइक कि दिस इज माई लास्ट ईयर ब्रो, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम डूइंग कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम when I was 17, ठीक है? And right now my age is 20, ठीक है? Since not 17, I just tell you 16, and I just post the video, but I'm never consistent. But now I'm just consistent for the last 2 months, and I see the results, ठीक है? So that's why if you just feel this thing, the progress, ठीक है? Then no one can stop you, ठीक है? Can you suggest me the best programming language? देखो, every programming language has their own purpose, ठीक है? There is nothing best programming language. If you master one programming language and if you want to switch to another, you can easily jump it, ठीक है? But if you have to just Rohan Kumar you the best programming language, so according to me you can simply learn JavaScript or a Python. By the way, Python is the great option, ठीक है? I'm learning, I'm a JavaScript developer, but Python is a good option because the opportunity and the job opening related to Python is slightly higher than JavaScript, ठीक है? डेवलपमेंट, क्योंकि JavaScript से भी डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है? बैकएंड अच्छी खासी हो जाती है, AIML में जाना चाहो तो उसमें जा सकते हो, एंड इफ यू हैव टू जंप टू डेटा एनालिटिक्स,
बिजनेस एनालिटिक्स, तो उसमें भी तुम जंप कर सकते हो। तो पाइथन या जावास्क्रिप्ट, चूज वन। फॉर एआई पाइथन, हाँ फॉर एआई पाइथन। You are deleted the message, bro. It's okay, it's okay. You also give the suggestion, it's okay. Pratham Singh, you are also give the suggestion, it's okay. Hmm. ठीक है। You are just remove the message. Why you removing the message? ठीक है। So component is also completed, ठीक है। Faizan bro, I am a one stack developer, ठीक है। I am a final year student who's doing a BCA, and I'm go live every single day to just preparing for my jobs or an internship. So just I go live every single day, that's it, ठीक है। आप करते क्या? I'm just a web developer, ठीक है। वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, एंड आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव लर्न। सिंपल। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रॉप्स, ठीक है। जस्ट टीचिंग में थोड़ा फास्ट करते हैं, बिकॉज आई जस्ट लाइक कि सो मेनी टॉपिक्स इज लेफ्ट, एंड आई जस्ट थॉट कि मैं इसको इसी में कवर कर लूँ, कि दिस इज वेरी स्लाइटली लेस टॉपिक, ठीक है। ब्रो आई डिड नॉट राइट द होल मैसेज एंड जस्ट प्रेस्ड एंटर, कोडिंग टाइपिंग हैबिट आई थिंक। ओह, आई अंडरस्टैंड इट ब्रो, आई अंडरस्टैंड इट। ये छोटे छोटे मैसेज करके एंटर करने का ना, बिल्कुल आई रिलेट दिस थिंग। दैट्स ग्रेट, ठीक है। भाई डिस्कॉर्ड शेयर तो वहां पे बात करते हैं। ब्रो देखो, आई डोंट क्रिएट द माय डिस्कॉर्ड सर्वर येट, बट आई थिंक सो मेनी पीपल जस्ट सेड टेल मी कि क्रिएट योर डिस्कॉर्ड सर्वर। सो मैं डिस्कॉर्ड सर्वर बनाता हूँ, ठीक है। हफ्ते भर के अंदर, 2-4 दिन के अंदर मैं डिस्कॉर्ड सर्वर अपना बनाता हूँ, एंड फिर मैं लिंक तुम्हें मेंशन करता हूँ। तब तक तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुम बात कर सकते हो, बट जस्ट लाइक कि प्रोफेशनली अच्छे से थोड़ा काम हो। सो हम फोकसिंग करेंगे डिस्कॉर्ड सर्वर को बनाने के लिए, ठीक है। सो मैं बनाता हूँ कुछ दिनों में, ठीक है। एंड आई जस्ट शेयर विद यू, ठीक है। Bro, you done any internship? Yeah, I done one internship and I just left it after 15 days. I just give that reason almost I think every live streaming session. Okay? I think I need to creating a video and just thumbnail like this. Why I'm leaving the company in 15 days. Because just like कि पता है, घर से बहुत दूर थी, सबसे बड़ा रीजन, ठीक है। उसीलिए उससे मुझे छोड़ना पड़ा। आई एम लिव्ड इन दिल्ली, एंड द कंपनी इज जस्ट लाइक इन नोएडा, ठीक है। डेली ट्रैवल नहीं हो पा रहा था मेरे से, 10 दिन गया भाई मैं। एंड आई जस्ट लाइक कि नहीं हो पाएगा मेरे से, एंड मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मेरे एग्जाम्स भी आ गए थे, सो आई यूज दिस माई एग्जाम एज अ एक्सक्यूज। तो मैंने अपना सब पे डाल दिया कि मेरे एग्जाम्स, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। एक्सक्यूज को जस्टिफिकेशन करना आना चाहिए, एंड आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग, बट नहीं हो पा रहा था मैनेज। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट लिविंग। और बाकी इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी इतना अच्छा खासा नहीं था, सो आई जस्ट, ठीक है। वेब डेव्स सीखा में कितना टाइम लगता है? वेब डेव करूँ या AIML? ब्रो AIML, डूइंग AIML। डिस्कॉर्ड सेटअप मैं करवा दूंगा। आई हैड लॉट ऑफ सर्वर एंड आई हैव 7 GTA 5 डेवलपर टू। ओके ओके, ठीक है। इफ यू जस्ट सेटअप द डिस्कॉर्ड सर्वर, वी कैन जस्ट टॉक इट आफ्टर द स्ट्रीमिंग सेशन, ओके। ओके, वी कैन जस्ट सेटअप द डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है। अभी जस्ट लाइक कि मैंने बस लर्न इन पब्लिक किया था, एंड जस्ट आई डोंट थॉट कि मतलब कम्युनिटी बढ़ते बढ़ते मतलब लोगों को पसंद आएगा, तो जस्ट लाइक कि हम इसको अच्छे से करते हैं। व्हाट इज योर मेन रोल इन दैट? यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी और अ स्ट्राइवर? Karwan, you are just asking this question to a striver or me? What is your main role in that? Props. Okay. And props क्या होता है? Let me just show you this is also. So props is just like we have to whenever we the pass the data from one component to another. Here you can see that app, and let me just tell you that how we can just perform the thing. So here we can just write uh, h1, ठीक है, enter, and
We just write down simply hello. What the hell is just like, just wait a second. I will not wrap into an variable, so that's why it's give me an error. I just simply remove this code. It will be closed, and right now I'm just simply write down h1 enter, and I just simply write down hello. Okay. I use the lexical scope. Hello, my name is and I simply pass the dollar, and I just simply pass the name. Okay, and I just simply pass this thing from an argument. Okay, I just simply go to that user and I just pass the value. कैसे पास करेंगे, let me just show you. कि just simply pass name आएगा ना, यहाँ से तो नेम ले लिया, ठीक है। कि हमने पास कैसे करा था यार, मैं भूल गया ये चीज। ठीक है, हेलो माय नेम इज जस्ट लाइक, ठीक है। यूट्यूब ब्रो जस्ट लाइक हो गए 6 महीने, हो गया कंसिस्टेंट, अभी थोड़ा 2 महीने से हुआ हो बाकी। ब्रो आई एम नॉट बिल्डिंग एनीथिंग करेंटली, आई एम जस्ट focusing on a core JavaScript. You are can also pass the props from children to parent, but you should not. हाँ जस्ट लाइक डेटा तो पास करना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जस्ट लाइक कि मैं प्रॉप्स यहाँ पे पास करूँगा, कैसे पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई पास दिस नेम, मैंने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड नेम के अंदर यहाँ से जो भी आएगा इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। लेट मी जस्ट वेट, आई जस्ट नीड टू गो टू दैट चैट जीपीटी। बाय द वे आई अंडरस्टैंड दैट कि पास कैसे करते हैं, मैं सिंटैक्स भूल गया थोड़ा सा बेसिकली। यही प्रॉब्लम होती है कि रिवीजन ना करने का, सोचने में इतना लग रहा है इजी, बाकी भाई इजी इजी है ये। हाउ टू पास प्रॉप्स, यही प्रॉब्लम है कि मन स्टैक का आगे पढ़ो पीछे का भूलते रहो, फिर पीछे का पढ़ो आगे का पढ़ते रहो। डेवलपमेंट एंड कोडिंग इज जस्ट लाइक ऑलवेज लर्निंग बेसिक, समझा, बेसिक ही पढ़ते रहो, ठीक है। ये जस्ट प्रॉप्स, ठीक है, नेम एंड एज, यूजर डॉट नेम, ओके ओके, अब समझ आया थोड़ा मुझे, ठीक है ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। हमें यहाँ से पास करना होगा, इसके अंदर यूजर नहीं है, यूजर को यहाँ से रिमूव करते हैं, एंड द पास गो टू दैट ऐप, एंड यहाँ पे हमने नेम को पास कर दिया। नॉट इन द JSX, विच सेमेस्टर यू इन component और डेटा। जस्ट लाइक वेट सेकंड, पास तो कर देते हैं, ठीक है। जिस दिन फंक्शन, दिस इज आवर component, we just simply pass the name and age in there and return it there, ठीक है। तो हम क्या, हमें क्या करना है बेसिकली, वी हैव टू, दिस इज द component, ठीक है। दिस इज ऐप डॉट JSX, ये हमारा component है, ठीक है। fuck भाई साहब, लाइव स्ट्रीमिंग में नाक कटा दी, ठीक है अपनी मैंने, इतने बेसिक क्वेश्चन में अटक रहा हूँ, ठीक है। फिर ठीक है, यहाँ पे नेम पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्रॉप्स, एंड गो टू दैट मेन एंड प्रॉप्स डॉट नेम, एंड यहाँ से हमने पास कर दिया नेम।
चाइल्ड कंपोनेंट ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने यूजर डॉट नेम से रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न यूजर डॉट नेम डॉट एज। नेम नमन, ठीक है। ओके, हेलो माय नेम इज अनडिफाइंड। जस्ट ओके ओके, जस्ट 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 मैं कर रहा हूँ इसको, जस्ट वेट, ठीक है। भूल गया थोड़ा सा मैं सिंटैक्स एक बार, ठीक है। पेरेंट से चाइल्ड में पास करना है ब्रो। व्हाट योर रोल इन इंटर्नशिप? माय रोल इन इंटर्नशिप, आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप। आई जस्ट नीड टू वर्क, लाइक कुछ जस्ट डिजाइन करना होता है यूआई को ना। यूआई जो होता है उसको उसमें इम्प्लीमेंट करना होता है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में, तो उसको तो एआई से कर लेता था मैं, थोड़ा बहुत खुद से करता था। बेसिक सी जॉब रोल थी, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में काम था उसमें, तो रिएक्ट पे भी काम नहीं था। एज इंटर्नशिप गया था ना, तो जस्ट डोंट एक्सपेक्ट मी सो मच। पेरेंट इट इज एन ऐप कंपोनेंट, रिटर्न ऐप डॉट यूज। नॉट लाइक दैट कि मैंने क्या किया। नेम है, फक फाइव फक। ये पेरेंट कोड है हमारा, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंटर करा, ठीक है। मेन डॉट जे एस एक्स ऐप डॉट इसमें गया, यूजर डॉट जे एस एक्स में, ठीक है। मेरे को क्या करना है इसके अंदर ना, ऐप डॉट जे एस एक्स है, ऐप डॉट जे एस एक्स में क्या करना है मुझे, इसको डिलीट करा, एंटर करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपली पास करता हूँ पहले एलिमेंट, ठीक है। मेरा आ गया h1, एंटर। एंड ये रहा, यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है, हेलो। और यहाँ पे नेम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉप्स, जो कि हम वहाँ से पास करेंगे, प्रॉप्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। दिस इज एन, सिंपली हम यहाँ पे प्रॉप्स करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉप्स को भेजना है, ठीक है। अब हम प्रॉप्स को यहाँ से भेजेंगे इस यूज़र से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सपोर्ट यूज़र, दिस इज आवर यूज़र कंपोनेंट। एंड यहाँ से हमें पास करना है क्या, नेम को। तो ऐसे क्या करेंगे, वी डोंट नीड टू पास द प्रॉप्स ना। मैं एक्चुअली मिस्टेक क्या कर रहा हूँ गाइस, एक बार थोड़ा बताना। प्रॉप्स भूल गया सिंपली, हिट सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। ये हो गया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉप्स पास कर दिया। और चाइल्ड पेरेंट क्या है, ये चाइल्ड पेरेंट है। इसके अंदर ये चीज़ आ गई, और यहाँ पे क्या था, रिटर्न कर देना है मुझे, यूज़र नेम इज इक्वल टू में। द फक इज आई एम डूइंग राइट नाउ, शिट। तो 2 महीने पहले ही तो करी थी। नाउ जस्ट चेक द
पास फ्रॉम द पेरेंट, दिस इज दिस। ओके, ये हो गया हमारा ऐप का कोड। एंड ऐप के कोड में सिंपली देखते हैं हमारा क्या था। सॉरी फॉर दिस गाइस कि मैं इस चीज़ में अटक गया। दिस इज एन प्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉप्स कर लिया, ये हमारा कोड करेक्ट था। हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि पास कैसे करना है। पास में अब जैसे नेम है, नेम के अंदर के स्ट्रीमिंग के बाद भी रिवीजन करना पड़ेगा का। इट इज़ एन नॉट अ यूजर कंपोनेंट, इट इज एन यूजर, ठीक है। एंड नाउ एंड यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर क्या नेम को पास करना पड़ेगा एज अ नमन। क्या हो रहा है ये छी। एवरी सॉल्यूशन विद चैट जीपीटी एंड यूज दिस लाइक h1 हेलो नमन, हेलो नेम, ओके। नेम डॉट props and app.js। लेट मी जस्ट एक सेकेंड रुकना। इतनी छोटी सी चीज के लिए पूरा 1 घंटा मतलब 10 मिनट बर्बाद कर दिया। क्या गलती हो रही है? हेल्थ वाले ठीक है। जस्ट लेट मी जस्ट टेल कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। डोंट गो टू चैट जीपीटी, ओके। क्या पढ़ रहे हो भाई, ठीक है। देन यूजर डॉट नेम अपलोडिंग, ठीक है। देन रिसीव द प्रॉप्स इन यूजर कंपोनेंट एवरी सॉल्यूशन इज एंड यूज लाइक h1 हेलो नेम। ऐप के अंदर क्या डाल दिया? ऐप के अंदर आ गया प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, तुमने भेजा ये यूजर नेम डॉट कोडिंग, ठीक है। नेम के अंदर मैंने पास कर दिया कोडिंग। यूजर नेम जस्ट कोडिंग क्या कर रहा हूँ भाई मैं। लेट मी जस्ट वेट। एंड यूजर डॉट कॉम्पोनेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कंफ्यूज हो गया मैं पूरा। माई नेम इज जस्ट लाइक, ठीक है। यूजर डॉट नेम में प्रॉप्स डॉट नेम पास नहीं करना था मेरे को। ऐप डॉट पास में प्रॉप्स डॉट नेम आ जाएगा, यूजर डॉट नेम इसको शायद मुझे पास करना है। देन पास द प्रॉप्स इन देयर यूजर डॉट नेम।
हेलो नमन, यहाँ तो आया, ठीक है। ओके, नाउ दिस कोड इज वर्किंग एंड जस्ट लाइक कि इतने इस इजी कोड में मैंने टाइम लगा दिया, बाकी अब मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा ये फिर से एक बार। दिस इज आवर, ठीक है। थैंक्स प्रथम भाई फॉर जस्ट हेल्प मी टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बाय द वे, जस्ट लाइक कि मुझे रिवीजन की ज़रूरत है काफ़ी प्रॉप्स में। पास ही करना होता है, ठीक है। देयर इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट था, नेम के अंदर मैंने बिल्कुल सिंपली पास कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने पास करा और यहाँ से उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट डॉट यूज़र प्रॉप्स डॉट नेम, और उसको पास कर दिया, ठीक है। प्रॉप्स का थोड़ा समझते हैं एक बार अच्छे से। इम्प्रूवमेंट लाइक कि props into, दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट रिसीविंग प्रॉप्स, ठीक है। कोड एग्जांपल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इंटरव्यू से, दिस इज अ फंक्शन कंपोनेंट रिसीविंग प्रॉप्स फ्रॉम इट्स पेरेंट component. The name props is passed by an attribute and the display it is dynamically inside JSX. Props will help make the component reusable and dynamic. ठीक है। Okay. Just wait. Now problem is fixed, but just like कि I need to practicing on a props because just like कि मैं इसमें इतना stuck हो गया इस चीज में, छोटी सी चीज में। props में मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया था, वो कैलकुलेटर बनाया था, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है बाय द वे। मैंने बनाया था 2 महीने पहले, उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया, बट जस्ट लाइक कि इसमें चीज में प्रॉब्लम आ गई मेरे को प्रॉप्स पास करने में, सिंपली जस्ट प्रॉप्स पास करने के लिए। प्रॉप्स में मैंने स्टाइलिंग तो पास कर रखी है। सो ब्रो, so anybody watching this streaming, you can just simply see that कि इतने बेसिक चीज भी कभी कभी तुमसे नहीं होगा, ठीक है। स्टेट तो पता ही है, स्टेट का जस्ट लाइक यू कैन जस्ट लाइक नीड टू रिवाइज द स्टेट। ओके, गो टू दिस एंड जस्ट क्रिएटिंग अ बेसिक काउंटर, ठीक है। State is just like a dynamic variable that can be changed dynamically to the website when it's re-rendered, ठीक है। And it will be just like you, if anybody just simply asking you a question is what is a state, so state is just like state is a variable, but it is a smarter because it will change the value dynamically, ठीक है। DOM में तुम्हें क्या करना होता है, हमें सेट टाइम आउट का यूज करना पड़ता है टू जस्ट अपडेट द वैल्यू, ठीक है, ऑन ऑन क्लिक इवेंट्स पे। बट इन रिएक्ट स्टेट विल बी डायनेमिकली अपडेटेड, ठीक है। सो वी दैट इज एन स्टेट, सो लेट मी जस्ट गिव यू एंड क्रिएटिंग अ बेसिक काउंटर, ठीक है। सो हम स्टेट को समझ लिए। बाकी टाइम इज ऑलरेडी वी हैव जस्ट लाइक कि 1 घंटा 30 मिनट हो चुका है, ठीक है। अपन and we have to just finishing in just 20 to 30 minutes, so we just need to complete that entire, ठीक है। and Pratham bhai, I just like कि thank you so much for this help me to the streaming। by the way, Rohan Singh just like कि क्या पढ़ रहे हो bro, I am just learning a React, ठीक है। I am just stuck in basic React, simple बताओ तो। I am stuck in basic React, okay। I am just go to there and simply I just need to, don't need to go there, go to that anti-gravity and just build a counter, ठीक है। so I use an creating a new variable, new component, ठीक है। a component name is just a counter dot jsx, ठीक है। and just rafc enter, delete, enter, and just creating a const, this is the current value, ठीक है। this is the current value of a counter and this is set counter, this is a function that used to change the value dynamically, ठीक है। counter or a set counter, and we have just simply put the value of this, we have used a use state hook, ठीक है। hooks का हम अच्छे थोड़ा रिवाइज करेंगे in the next section, ठीक है। and this is a use state, so we have just simply put the value 0 and here we just simply creating h1 and, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। बाय द वे, बेसिक तो वो भी था बट स्टिल आई जस्ट फील, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे काउंटर
and I just need to import this from in app.js. After that counter हमने import कर लिया. Here you can see that why it's given error, just like it counter it's here. ठीक है, I imported the counter from there, and why this the output is not showing anything. Console.log क्या है? The error is just like object are not valid as JavaScript. I did want to be a remember. I use an array instead. Just a wait second. ठीक है, काउंटर डॉट जे एस ऐप डॉट जे एस एक्स में, तो इसको ऐप डॉट जे एस एक्स से हटाते हैं. ठीक है, हम इसको सिंपली पास क्या कर देंगे, हम इसको पास कर देंगे सीधा मेन में. ठीक है, मेन में आफ्टर दैट हम यहाँ इसको काउंटर को पास कर देंगे. ठीक है, काउंटर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज आई थिंक वी हैव नॉट इम्पोर्टेड देयर, so now it's imported. Let me view that. ठीक है, ऑब्जेक्ट की has not verified children. If you want to render a collection of children, use an array instead of. React DOM client is just like if you mean to render a collection of a children, use an array instead. What? Just like it's many error on the basis of that. Hello, buddy. Hello, hello. Hello, Black Star Gaming. Hello. Welcome to my stream. Basic function है, ठीक है. Okay, I think just need to import it there as well. ठीक है, import use state from there. And now let me just check the code. ठीक है, क्या error दे रहा है कि error the object is just like a React DOM है. Objects are not calibrated the way, ठीक है. So I think I just need to fix in this user dot may app.js. Okay, first thing I just need to remove this from. ठीक है, क्या करते हैं app.jsx को ना यहाँ से रिमूव ही करते हैं main.jsx से. ठीक है, अभी के लिए इसको रिमूव ही करते हैं. नाउ आई थिंक इट्स नॉट गिवन एनी एरर. ठीक है, उसी में था क्योंकि प्रॉप पास कर रहे थे. एंड हियर कैन सी दैट ऑन द इंक्रीमेंट द स्टेट विल बी वैल्यू चेंज. ठीक है, बेसिक चीज़ है. स्टेट क्या होता है, एंड नाउ जस्ट मूविंग टू देयर. एंड व्हाट इज एन एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, स्टेट is a variable. It is also a variable, but smarter, because smarter. It will use to change the variable, change the value dynamically. ठीक है, it will use to change the value dynamically. ठीक है, simple सा आंसर है. ठीक है, just like कि if I just need to copy this and go to that chat GPT and ask paste this answer there, so let me show you that. ठीक है, import this. या थैंक्स ब्रो, बाय द वे कोड इज वर्किंग सक्सेसफुली. एंड आई जस्ट लाइक कि थोड़ा रिवीजन की जरूरत है स्टेट में. मतलब मैं आई जस्ट स्टक इन सिंपल, सिंपल थिंग. मतलब एक बेसिक सा प्रॉप पास नहीं हो रहा था मेरे से. जस्ट लाइक कि कौन सी शीट पर काम कर रहे हो आप. यो ब्रो, दिस इज आई जस्ट क्रिएटेड दिस नोशन टेम्पलेट सो जस्ट फॉर माय रिवीजन. ठीक है, I just learning a React for the last few 2 to 3 months and I just don't revise it, so that's the problem that I'm facing. ठीक है, so I simply follow this sheet and I just it will be created using a Claude or a Chat GPT. Okay, no bro, that code is still wrong, trust me.
Okay, I just need to fix it. Bro, you write an entire code for me just like this. Just where is the format document? ठीक है. What the hell fuck is that? ये format document क्यों नहीं कर रहा? कोई नहीं, हम कर लेते हैं just. अरे यार. बाय द वे कोड वर्क कर चुका है भाई, मैं स्टिल लाइक कि तुमने तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं कर देता हूँ बाय द वे. ठीक है. दिस इज एन ऐप कोड ना. अरे यार. const copy, this is an app code, so simply go to there. ठीक है, रिएक्ट का कोड हो गया. Here is the code for user, const user. Top should be passed and declare passing a time. ठीक है. नेम रिएक्ट. ठीक है. जैसा कोड बोला था वैसा इसमें नेम में रिएक्ट पास कर दिया. यहाँ पे नेम आ जाएगा. ठीक है. एंड ऐप डॉट जेएसएस में हेलो, नेम इज प्रथम. स्टिल एन एरर. यूजर इज नॉट डिफाइन. ओके. ओके.
ठीक है, इसमें पास कर दिया नेम, ठीक है, इट विल बी वर्किंग। एंड यहाँ से मेरे को इंपोर्ट क्या करना है यूज़र से, क्या इंपोर्ट रह गया वहाँ पे, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड एंड ऐप डॉट जे एस एक्स, ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर मुझे यूज़र इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम दिस एंड ओके। ऐप डॉट जे एस एक्स 3 पे क्या एरर आया है, ऐप डॉट जे एस एक्स के कोड नंबर 3 पे, व्हाट द हेल, क्यों आया एरर ये वाकई। ओके ओके ओके, नाउ जस्ट मूविंग ऑन इट, ऐप डॉट जे एस एक्स के 3 पे, ऐप डॉट जे एस एक्स फाइल ये रही, ठीक है। लाइन नंबर 3 पे क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, रिटर्न भी ठीक है, डिव भी मैंने कर ही दिया है। इंपोर्ट यूजर डॉट नेम, अच्छा यहाँ पे प्रॉप्स पास नहीं किया मैंने, आई थिंक है ना, यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रॉप्स में यार, जस्ट सिंपली वहां से पेरेंट से मैंने पास कर दिया। हाँ एक बार बस अब चैट जीपीटी से पूछा, सही बताऊं मैं, प्रथम मैं ना अपने आप पे ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कि ये भाई मेरे से ये कंपोनेंट नहीं हुआ, कि मतलब कंपोनेंट में प्रॉप्स पास नहीं किए जा रहे, सिंपली इतना इजी क्वेश्चन, इतनी इजी चीज है ये, ये सबसे बेसिक में आता है, जस्ट स्ट्रगल, आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस टाइप ऑफ, काम करना पड़ेगा, और भाई ऐसे तो चलेगा नहीं काम। इसलिए कि काउंटर पे थोड़ा देखूं मैं एक बार क्या इशू है पहले, ठीक है। इम्प्लीमेंट टास्क पे तो क्या है, रिमूव द सेल्फ इंपोर्ट, import user from user, the statement is recursive and cause a name conflict from the component definition. तो इस जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड यार, कितने कॉल, हेलो।
इतने सब छोटे से कोड के लिए भी टेस्टिंग कर रहा है। नाम पास नहीं किया था ब्रो, जस्ट लाइक कि फिर भी एक सेकंड रुको, अब एंटी ग्रेविटी फिक्स करेगा इस चीज को। बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। आई थिंक इट्स फिक्स एवरीथिंग इन द एरर। लेट मी जस्ट गो टू दिस app.jsx। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सबसे पहले समझाते हैं मेन डॉट काउंटर डॉट जेएसएक्स में, यहाँ सब ठीक है। यूजर डॉट जेएसएक्स में क्या था? दो आ रखे हैं, इसको इसमें इसमें कर दिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर दो। ये है, ठीक है। मेन डॉट जेएसएक्स में सब ठीक है। ऐप डॉट जेएसएक्स में क्या प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ पे हमें नेम को पास नहीं करना। ओके, एक्सेप्ट करो, ठीक है। सो आवर कोड इज जस्ट वर्किंग, जस्ट गो थ्रू विद एवरी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ठीक है भाई, तो प्रथम जस्ट लाइक कि भाई मैं तो डिसअपॉइंट हो गया ये इतने चीज में, इतने बेसिक क्वेश्चन में, मतलब इतना स्टक रहा है थोड़ी सी चीज, छोटी सी चीज के लिए, ठीक है। एंड बाय द वे जस्ट यू कैन सी दैट दिस इज app.jsx is the file, ठीक है। here we can just simply pass the prop name of that, ठीक है। हमने यूजर के अंदर ये चीज पास करी, ठीक है। और यूजर में यहाँ से ये चीज ले ली, ठीक है। div क्रिएट किया, we just simply pass this thing in a user, ठीक है। और यूजर में क्या आया? यूजर में सिंपली उसने नेम को लिया और यहाँ पे पास कर दिया। इतना इजी था बस। दिस इज द parent that will send the data to that child, and here we can just simply import it from there, ठीक है। we just simply write a name there, and here you can see that a user dot name return user name, ठीक है। समझ आ गया? मतलब यहाँ से इसने पास किया था, ठीक है। यहाँ से हमने ले लिया और यहाँ से ऐप डॉट जेएसएक्स ने इसमें भेज दिया कि यूजर जो कंपोनेंट उसमें नेम में पास ये पास कर दो, ठीक है। एंड here we just simply import it, okay, so the now answer is just correct, everything is working properly, ठीक है। Thanks Pratham Bhai for fix this problem. And now we just moving to the next thing. And we should I understand that what is the state event handling। Event handling को हम कल पढ़ेंगे क्योंकि it will take some times, and conditional rendering on the basis of conditional and case or, ठीक है। तो ये the next three topics we have study tomorrow, ठीक है। And before the streaming session I just need to make sure I just understand some few topics, because just like कि multiple tasking के चक्कर में productivity खराब हो रही है, चीज़ें खराब हो रही है, so we have just I need to just focusing and work on this thing, because I will never expect it to myself कि I will be stucking in props, just I'm struggling to pass the props, because I will understand that will I just simply need to pass it, but I forget the syntax, so that's why practice is so important in web development, okay? If I don't learn in public, I can simply go to the chat GPT and ask it. But here you can see that this is the actually problem. Not you I can even stuck in any simple question, okay? In the last I'm just working on a backend, ठीक है। backend में इतनी अच्छी अच्छी खासी हमने हमने कोर्स ओरिजिन को फिक्स किया, हमने प्रॉप्स प्रॉप्स क्या कहते हैं, हमने रूट बनाया, एंड बट जस्ट लाइक कि वी हैव स्टक इन प्रॉप्स। आई विल जस्ट लाइक मुझे अपने पास ही आ रही है, बाकी कोई बात नहीं, वी आर जस्ट फिक्सिंग दिस टुमारो, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द थ्री टॉपिक्स यू कैन सी दैट इवेंट हैंडलिंग, a conditional handling and list or a case, ठीक है। I fix मतलब I revised this concept yesterday, and it's very bad English. I will revise this rest of concept tomorrow, and also the hook, ठीक है। हुक में हम क्या पढ़ेंगे? हुक में there are so important hooks that we used in the React, so we also understand these hooks, and this is the core three topic that we have not completed today, ठीक है। So now just I am close this streaming session. I think you like this streaming session, and if you have any doubt and any questions, you can just simply ask me in the comment section. I will reply all the answer, and make sure you can join my WhatsApp channel, so we can just I can share the resources that I have used, so this is also helpful for you. And just make sure you can subscribe the YouTube channel and like it, and follow my Instagram pages, and if you have any question, so you can just simply send me a message on Instagram. I can reply and try to reply the every message you have sent me, so ठीक है। So you can just simply follow me on the Instagram,
and just subscribe my YouTube channel. So just bye bye, take care, and learn in public, because this is the day start because this is the beginning. Okay, it's a beginning. That